Welcome back to our YouTube channel, guys. Today, you will learn some vocabulary related to kitchen action. Let's get started. First is strain. It is used for liquid. छानना, Strain the water or tea. पानी या चाय छान दो. Next is sift. It is used for powder. सिफ्ट का मतलब भी छानना ही होता है, पर पाउडर को छानना. Yes, sift the flour. आटा छान दो, या फिर मैदा के लिए भी कह सकते हैं कि मैदा छान दो. Next is grind. पीसाना, Grind the flax seeds. अलसी पीस दो. Next is grate. कद्दूकस करना, Example, grate the bottle gourd or cucumber. घिया और खीरे को कद्दूकस कर दो. Next is cut and chop. Both means to cut, but chop means to cut extremely small pieces. Example, cut the potato and chop the onion. कट मतलब काटना, जैसे आलू काट दो, पर चॉप मतलब कि टुकड़े टुकड़े करके काटना, जैसे प्याज को चॉप कर दो. Next is peel. छीलना, For example, Lucy is peeling the potato. लूसी आलू छील रही है. Next is crush. कूटना या कुचलना, Example, crush the ginger. अदरक कूट लो. Next is whisk. फेंटना, Whisk the eggs. अंडे फेंट लो. Next is churn. मथना, Churn the butter properly. मक्खन को अच्छे से मथना. Next is knead. गूंथना, Knead the dough. आटा गूंथो. Next is roll out. बेलना, Roll out the chapati. रोटी को बेल दो. Next is bake. सेकना, Bake the cake in microwave. माइक्रोवेव में केक बनने दो. Next is flip. पलटना, Flip the chapati. रोटी को पलट दो. Next is roast. भूनना, Roast the groundnuts on low flame. मूंगफली को धीमी आंच पर भूनो. Next is fry. तलना, Fry the fish. मछली को तलो. Thanks for watching. If you love the video, drop the message in the comment box. Bye bye.